Hello and good evening to all of you. Yes, I was waiting for my girls and my dear ones to uh, come and join. And yes, here I have Priyanka and Kavita. Hi, hello, my dear. Uh, Already joined in. So it's 5 o'clock in the evening. As every evening at 5, we are here with our tea time learning, okay, of English, communication skills, personality development, so on and so forth, on this very, very special Facebook Live page of SKD University, Hanumangarh, and with you on this Facebook live streaming of the session. I am your facilitator, Parmita Dhar, all the way from the city of Joy, Kolkata. Well, time to start with our new edition, with our new session, and today I'm going to discuss something about communication. When we communicate in a group, it becomes group communication. You remember when I started doing the various types of communication, I said interpersonal, group, mass, and and grapevine. So there are five types of communication. I have mentioned. Okay, Deepman, I forgot your name. You have a name other than this uh, name which through which you are logging in, right? So we will be talking today about one very, very important area of communication, which is called the group communication, now. Muskan, yes, Muskan, BSc B.Ed. So is this a combined course, integrated course? Manisha Manu, hello Manisha. Agronomy. What do you study in agronomy? There's something very interesting. Simu and Gagandeep. Yes, Simu and Gagandeep. मुझे मालूम है. I remember your names, right? So, okay. So we have a group now. We have already formed a group, and we will continue with group communication. Now, क्या आप लोगों ने कभी group communication में participate किया है? A formal group communication में क्या आप लोगों ने participate किया है? Okay, so the Muskan is saying that yes, it is an integrated course. That's great, and 4 years integrated. Okay, okay, that's good. That's good. So after that, you can apply for teaching in schools, right? Good evening, ma'am. Good evening, Priya Chaudhary. So एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी ग्रुप डिस्कशन पे पार्टिसिपेट किया है? Did you ever participate in group discussion? Good evening, Lalit. Dolly Yadav, good evening, beta. Good evening, beta. कभी किया है? शायद किया है, शायद नहीं किया है. हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट. मैं हमेशा बहुत अच्छी रहती हूँ. टच वुड, right? अच्छा, so Simu and Gagandeep is saying that yes, they have participated. And what did you do there? What did you do there? Dolly Yadav, कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ. अभी कोविड के टाइम पे ना, इफ एनीवन इज कीपिंग फिजिकली वेल, आई थिंक दैट्स ऑल वी कैन सीक फ्रॉम. हाँ, उतना ही हम लोग मतलब मांग सकते हैं, चाह सकते हैं, है ना? तो ग्रुप डिस्कशन कब और कहाँ होता है? व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? व्हेन द नंबर ऑफ पीपल participating in a discussion is more than 5, or 5 and more than 5, we call it group discussion. Now, why do we do group discussion? Generally in the college canteen, or हाँ, कोई बात नहीं, हिंदी में भी तो ग्रुप डिस्कशन ही है ना. हम लोग जब फैमिली में 5-6 लोग एक साथ, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन मिलके किसी विषय में बात करते हैं, ऐसे ही हंसी मजाक में बात करते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं और बीच बीच में बात करते हैं, वो भी एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है, राइट? राजेंद्र कुमार नमस्ते. रिया डोडा, हाय रिया. ओके, तो वो भी एक तरह का
इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है। लेकिन जब हम उसको फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में ले जाते हैं, व्हेन वी टेक इट टू द फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन, इट बिकम्स अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड एलिमिनेशन। वो क्या हो जाता है, तब वो हो जाता है एक इवैल्यूएशन और एलिमिनेशन का प्रोसेस। जैसे कि मान लो अगर आप कहीं पे एडमिशन लेने जाते हो, आजकल तो बच्चे 3-4 साल के बच्चे जब एडमिशन लेने जाते हैं, उनके पेरेंट्स जब उनको एडमिशन लेने के लिए लेके जाते हैं किसी बड़े से स्कूल में, वहां पे पेरेंट्स का ग्रुप डिस्कशन होता है। पता नहीं क्यों होता है, लेकिन होता है, राइट। जब आप एमबीए करने जाओगे, मुझे पता नहीं दूसरे करिकुलम्स के बारे में उतना ही, लेकिन जब आप एमबीए करने जाओगे तब एक प्रिलिमिनरी ग्रुप डिस्कशन होगा। हेलो मॉडर्न सिंह, एक प्रिलिमिनरी ग्रुप डिस्कशन होगा जहां पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा वेदर यू आर सुटेबल फॉर दैट कोर्स और नॉट, राइट। व्हेन यू गो फॉर अ जॉब, ग्रुप डिस्कशन इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इवेल्युएशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस। तो इवेल्युएशन का मतलब जहां पे मुझे मार्क्स दिया जा रहा है, और एलिमिनेशन मतलब जहां पे लोगों को हटाया जा रहा है कि 10 लोग जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, वहां से 7 लोगों को नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोग लेके जाते हैं। तीनों को हम या तो होल्ड पे रखते हैं या तो उनको बता देते हैं कि आपका नहीं हुआ, राइट। सो वी एलिमिनेट देम, राइट। सो ये प्रोसेस के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, राइट। ये प्रोसेस के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो ग्रुप डिस्कशन में लेट मी शेयर माय पीपीटी विथ यू फर्स्ट। No, it is not. Is it showing? Are you being able to see the PPT? Can anybody please respond? गगनदीप, प्रियंका, कोई भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, पीपीटी दिख रहा है या नहीं? मेरे यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कोशिश करती हूँ देखने की। पता नहीं। No, I don't think it is showing. No, ma'am. Okay, great. Thank you, Kavita. Thank. लखविंदर, कैसे हो? Good to see you in the session. Good to see you in the session. Is it showing now? Is it showing now? No, ma'am. Okay. I have just shared the PPT. I believe it will be shown anytime because it is taking a little bit of time to get the sharing started. I hope it would be uh, done within seconds. But before that, before it starts, let me start with my lecture session. That is, what is a group discussion? A group discussion, in generally, in short, we call it what? We call it a GD, right? It is a discussion among group, right? And what do we mean by a discussion? A discussion means an exchange of views, consideration of a subject by a group, an earnest conversation, a formal discourse on a topic, any topic, right? So when we maybe a friends or whatever, we sit down and we talk about something. What happens? That becomes a group discussion. Now, when we do it in a more formal manner, what do? We do it very categorically with pens and papers in our hand.
We write the points and we do everything so that the other person who is evaluating us for that discussion can understand about our knowledge, right? Can understand us about our knowledge, right? So what do? We exchange views. Say, for example, I give you an example of a group discussion that virtual education virtual education is a new method of education in our country, and it is going to stay, and it is going to stay. So I'm giving a statement to you, right? Each Okay, let me give you another simpler topic, that our schools should teach us skill based education. Our schools should teach us skill based education, like gardening, repairing something, a mobile phone, or whatever. Apart from theoretical education, our school should take care of skill based education. So this is a statement which I'm saying as an initiator of the group discussion, right? I do not know why it is not showing. Let me try once more. uh, so what I'm doing, giving a kind of I am actually giving a kind of a statement. And on that statement, what is happening? People are giving or exchanging their views. People are exchanging their ideas, right? They're conversing. Maybe 5 people are sitting in a group discussion, or 10 people are sitting in a group discussion, and each one of them are speaking in the same line. So here, let me make one point very, very categorical, that a group discussion is not a debate. Now, what is a debate? A debate where we argue. What is a debate? A debate is a thing. A debate is a discussion process where we argue, isn't it? A group discussion is not an argument. A group discussion is an honest conversation, an honest exchange of views, ideas on a particular topic. एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टॉपिक के दो पहलू आप बताते हो. डिबेट में क्या होता है, आपको एक ही एरिया लेके, एक ही बात को लेके, एक ही साइड को लेके आपको झगड़ा करना है, आर्ग्यू करना है, राइट? बट व्हाट हैपेंस इन अ ग्रुप डिस्कशन, यू कैन आल्सो से द प्रॉस and the cons in the same discussion process, and then bring it to a common conclusion, close it into a common conclusion, right? So a group discussion is a discussion where we are not arguing. We might argue if necessary, लेकिन जैसे डिबेट में होता है ना कि हम लोग सिर्फ लड़ाई ही करते हैं, अपने पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग लड़ते जाते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ पैर ऐसे फेंकते हैं, राइट? We do not do it. We do not do it when it is a group discussion. Am I clear to all of you? Right. So, I'm so sorry. I do not know why it is not showing. I mean, why it is not showing that my PPT, right? क्या प्रॉब्लम हो जाता है मुझे नहीं मालूम, बट मेरा इंटरनेट स्पीड इज वेरी गुड टुडे. See,
The same problem. I do not know if it is a problem from the host side or what. Anyway, let me just give it one more. It's not yet showing. Leave it. So the next thing which is important for us to know that what are we assessed for in a GD. GD में हमें किस विषय पे हमारा असेसमेंट होता है, किस विषय पे ग्रुप डिस्कशन में हमारा असेसमेंट होता है. एक टॉपिक दिया गया है हम लोगों को, तो उस पे क्या देखेंगे जब हम लोग बोलेंगे, व्हेन वी विल स्पीक, व्हाट आर दे गोइंग टू check? The first thing that they're going to check is our knowledge about the macro and the micro environment. Let me tell you, कभी भी किसी कॉलेज के एडमिशन में हो, किसी नौकरी की फर्स्ट राउंड में हो, never ever they give you a topic which is very technical. ऐसा कुछ नहीं देते जो कि बहुत टेक्निकल हो, right? जहाँ पे you only have to talk about data and statistics and all. They generally give you topic which are generalized about environment, about society, right? About education, all these things. All these things. They generally give you that. So it is very, very necessary for us to have an awareness about the macro and the micro environment. So when I say macro and micro environment, what do I mean? Yeah, I know we can continue, uh, but without the PPT. Thank you, Himanshi. Thank you for considering. Oh, thanks. Kavita, hi. Thank you, Kavita. Thank you for your feedback. ममता लेट हो गई एग्जाम थे, कोई बात नहीं ममता, डोंट वरी. यू कैन ऑलवेज चेक दिस सेशन ऑन फेसबुक ऑफ. Yes, Dolly Yadav. You are absolutely right. To teach is to learn twice over. Absolutely. This GD thing, I teach to all the students who come to me. But every time I try to give new examples, I try to give new situations, and in that way it brings a variety to my training. Otherwise एक ही चीज अगर मैं बोलती जाऊं मैं खुद भी बोर हो जाऊंगी, और जो मेरे बच्चे हैं जैसे आप लोगों को भी वो थोड़ा सा मोनोटोनस लगेगा. तो फर्स्ट थिंग, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है. सो व्हेन वी से माइक्रो, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? द कोर. Micro is smaller one, macro is the bigger one, right? So micro and macro environment के बारे में आप लोगों का कुछ भी कुछ हद तक उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट? जैसे कि अभी मान लीजिए कि पैंडेमिक के टाइम वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है हमारे state yani in the nation, and also in the state, right? So how many people have been vaccinated, what is the condition? And there are so many people who are yet to decide whether to go for the vaccination or not.
could be a very good topic for group discussion. A very, very good topic for discussion. Education. The new education policy has come up. There are so many discussions, seminars, webinars going on based on the new education policy, right? So, a little bit about that. As I was talking about the skill based learning, this is a very important part of the new education policy, right? If you have gone through the policy or you have learned something about that policy, that is a very, very important part of the new education policy. Okay, so Govind Sokhal has also joined. 5 years LLB. चलो, गोविंद जी आपने क्या LLB कंप्लीट कर दिया है या यू आर स्टिल स्टडिंग? ओके, सो अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड ओलंपिक्स में इंडिया का प्रदर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन के लिए. अभिनव बिंद्रा के बाद फर्स्ट गोल्ड by नीरज चोपड़ा, isn't it? पूनम, अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने लॉ प्रोफेशन को चूज किया है. वेरी गुड. वी रियली नीड गुड डॉक्टर्स एंड गुड लॉयर्स इन आवर कंट्री, राइट? Ability to think analytically, creatively, clear and fast. What else is shown in group discussion? The ability to think analytically. That is, what is the meaning of analysis? Analysis का हिंदी क्या है? आप बताओ जरा मेरे को. Hi Anita. Yes, Neeraj Chopra. Yes, absolutely. What is the meaning of analysis? हिंदी में analysis को क्या बोलते हैं हम लोग? मुझे नहीं मालूम. मुझे बांग्ला भी याद नहीं आ रहा है अभी बात करते करते. सो जो भी हो वो, right? Second is they want to see विवरण. Okay, great. विश्लेषणात्मक. Yes, analysis is विश्लेषण. Dolly, right? Creatively, वही the same thing, you have to present it properly. As we say, old wine in new bottle. That is the idiom. Old wine in new bottle. How you're going to present it. Okay, तो that creativity, कहाँ से आप शुरू करोगे? How you're going to start? How you're going to bring everybody into your line of thinking? That is what we see generally is being seen in group discussion. Suppose जैसे कि ये भी हम लोगों का ना एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मे बी द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बिट डिफरेंट. आई एम टॉकिंग एंड यू पीपल आर राइटिंग, बट वी आर एक्चुअली कन्वर्सिंग. हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, राइट? कभी सिमू और गगनदीप बोल रहे हैं, कभी डॉली बोल रहा है, तो कभी गोविंद बोल रहे हैं, कभी कविता बोल रही है, कभी हिमांशी बोल रही है, राइट? महावीर सिंह चौहान. महावीर जी आप मुझे मैसेज कीजिएगा आफ्टर द सेशन ऑन माय फेसबुक मैसेंजर. आई विल स्पीक टू यू. ओके महावीर जी, आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपसे इस विषय में बात करूंगी. ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे it is very important for me, I being the initiator of the discussion, कि सबको एक लाइन पे मैं लाके खड़ा करूं. जैसे मैं बात कर रही हूँ ग्रुप डिस्कशन के बारे में, अगर सिमू अभी बात करती है कि लास्ट 2 हफ्ते पहले मैम आपने प्रिपोजिशन पढ़ाया था, डॉली अगर बात करती है कि मैम आज छोड़िए ना, आज फिल्म के बारे में बात करते हैं, तो क्या होगा? जो टॉपिक है वो इधर उधर भटक जाएगा. इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी of a communicator who is doing group communication to bring everybody, to streamline everybody, सबको एक रास्ते पे लाना. वो जो कर सकता है ग्रुप डिस्कशन में, उसको हम लोग बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं. ग्रुप डिस्कशन में हर समय आपको बहुत कुछ बोलना है ये नहीं है. एटीट्यूड आपका कैसा है, आप कैसे दूसरों के चीजों को समझते हैं, दूसरे के भाव को समझते हैं, दूसरे के थिंकिंग को समझते हैं, वो इम्पोर्टेंट है.
एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड पे मेरा एक सेशन होगा. मे बी आई विल डू दैट सेशन ऑन फ्राइडे. I'm telling this to you today. I'll be telling this to the university people also, because that's a very, very important session. Three very important sessions I'm going to do this week, one this week and two next week. So one is positive attitude, which I'll do on Friday, right? So day after tomorrow, because you also come a little bit prepared, right? So वो attitude देखते हैं group discussion में. समझ में आ रहा है बच्चा? सो वो एटीट्यूड दिख रहा है ग्रुप डिस्कशन में, राइट? और क्या देखते हैं ग्रुप डिस्कशन में? कितना फास्ट हम लोग सोच सकते हैं. आपको टॉपिक दिया और उसके बाद आपको 10 मिनट टाइम दिया जाएगा, मैक्स टू मैक्स. Max to max, you will get 10 minutes time, right? And in that 10 minutes time, how and bring everything in the streamline is important. Okay, am I clear to all of you? Am I clear to all of you? Right, right, right. What information? Thanks for the information, मैम. कविता, कौन सा इंफॉर्मेशन के बारे में आप बात कर रहे हो बेटा? जो भी हो, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है. Okay, okay. The next thing which is important is ability to communicate. Okay, okay, great. Ability to communicate. So to communicate, what do we need to do? To communicate, what do we need to do? The first thing, to communicate orally, we need to listen. कभी कभी ऐसा ही होता है कि आप लोग बैठ जाते हो ग्रुप डिस्कशन में एंड यू हैव नो क्लू अबाउट द टॉपिक. तो हम लोग तब क्या करते हैं पता है? ये छोटा सा ट्रिक, right? One small trick. What do we do then? We actually listen to others. सबसे सुनते हैं और फिर वहां से कुछ सीखते हैं. वहां से इधर से थोड़ा, उधर से थोड़ा. जैसे एग्जामिनेशन में, जब फिजिकल एग्जामिनेशन होता था आप लोगों का, जब आप लोग हॉल कलेक्शन करते थे ना, ग्रुप डिस्कशन में भी हॉल कलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Am I clear to all of you? चलिए मान लीजिए मुझे दिया गया है कि आप लोग, जैसे किसी ने मुझे अभी लिखा था कि एग्रोनॉमी, somebody studying about एग्रोनॉमी, राइट? ये एग्रोनॉमी है क्या? मुझे नहीं मालूम. I really do not know what is this agronomy all about. What is this agronomy all about? Right? So agronomy is something, if a topic is given, that what would be the future of a child if he or she learns about, does a graduation or post graduation in agronomy. तो मुझे तो कुछ नहीं मालूम होगा. I too don't know. So we can मोनू वर्मा, तुम भी ना. माय स्वीट गर्ल. चलो, सो एग्रोनॉमी क्या है? अभी मैंने गूगल में, मुझे सर्च करना होगा, ढूंढना होगा. तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोगों से थोड़ा जान के, थोड़ा अपना कॉमन सेंस उसमें डाल के कुछ एक बता सकती हूँ. और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे सबसे पहले जो करना होगा वो है listening. So in a group discussion, the listening skills is also very very important. Dolly Yadav is saying I too do not know. कोई बात नहीं डॉली, हम लोग सीख जाएंगे, don't worry. Right? Articulation, sentence formation, and sentence formation and body language. आप देख, I mean, I'm just giving you my example. Don't think that this is the end of the world. You will have a lot of better examples. लेकिन मैं जब बात करती हूँ, मैं ऐसे हाथों को फैलाती हूँ, right? मैं पॉइंट आउट करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ. Other than speaking, why is it important?
because it shows that I am involved in the process. अगर मुझे ऐसे हाथ बांध के ऐसे करके बैठ के बात करना होता आप लोगों से, तो मैं 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद मेरे पास कुछ रहता नहीं बोलने के लिए. Why? Because I'm not having the support of my body language. This support of body language is very important. And ma'am, my sentence making is very weak. अच्छा ठीक है, हम लोग देखेंगे. विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. एक्चुअली ना, आई कम टू इट. सिमू, मुझे एकदम सेशन के एंड में मुझे ये याद दिला देना प्लीज. सो आई जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट इट. दो आई कैन नॉट टीच यू इन दिस सेशन, बट आई जस्ट टेल यू वेयर टू टेक केयर. ओके, तो मुझे सेशन के एकदम एंड में याद दिलाना, ठीक है? अभी मुझे ये खत्म करने दो. सो व्हेन आई एम डूइंग इट, it shows that I'm involved in the process. And if I have the right body language, then I'm evaluated positively. अगर मैं ऐसे करके बात करूँ ना, you people must learn how to do good group discussion. Otherwise, group discussion is never going to be a good evaluation process for you. I don't know how you are going to do it, but you have to do it. क्या आप लोगों को ये सुनना अच्छा लगेगा? See, I'm enacting for you all. So you tell me, क्या आप लोगों को ये सुनना अच्छा लगेगा? मेरा वॉइस, मेरा थ्रोइंग, मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सारा कुछ? नो. यस. So no, I'm getting some response from Muskan. Not interesting, ma'am. Absolutely. Absolutely. So you should have a body language. You should have a body language, yes, Priyanka, where you will involve people. Your people with whom you are doing the discussion must feel that it is a positive scenario. It is a positive scenario. That is what it's being seen in a group discussion process. Right? What is the next one? The next one is flexibility and the ability to handle stress. Flexibility and the ability to handle stress. पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं बार बार बाहर देख रही हूँ. मेरे यहाँ पे बरामदे का दरवाजा खुला हुआ है. 2 दिन से लग रहा है कि अभी बारिश आएगी, अभी बारिश आएगी. राइट? लेकिन बारिश नहीं आ रहा है. अभी भी लग रहा है कि अभी बारिश होगी, तो मैं बार बार देख रही हूँ. मोनू ने क्या लिखा है? वैसे ही इंग्लिश कम आती है, अब तो कुछ समझ ही नहीं आया. मतलब किस बारे में आपको समझ में नहीं आया मोनू? अब बताइए. आप तो वही हो ना जो बहुत रिस्पॉन्स करते हो क्लास में. आर यू दैट मोनू? Right? So in that case, you know, we should be able to handle our stress. कैसे स्ट्रेस होता है ग्रुप डिस्कशन में? स्ट्रेस कब आता है? फर्स्ट स्ट्रेस, व्हेन वी डू नॉट नो अबाउट द टॉपिक, वी गेट वेरी स्ट्रेस्ड. बहुत टेंशन हो जाती है कि मुझे तो टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है. स्ट्रेस नंबर 2, लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम. वो अच्छा, आपने जल्दी जल्दी जो सेंटेंस बोला वही तो मैं बोल रही हूँ. अगर किसी का बॉडी लैंग्वेज वैसा हो, थ्रोइंग वैसा हो, तो क्या आपको यस यस क्या आपको वो सुनने में अच्छा लगेगा या वो समझ समझ आएगा? वो नहीं आएगा. इसीलिए बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक ठीक मोनू, राइट. तो फर्स्ट स्ट्रेस ग्रुप डिस्कशन में कब आता है? जब ऐसा टॉपिक दिया गया हो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम. स्ट्रेस नंबर 1. स्ट्रेस नंबर 2, जब लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, जब मुझे थोड़ा सा डर लगे कि मुझे इंग्लिश में बात करना हो या मुझे हिंदी में बात करनी हो या मुझे किसी और लैंग्वेज में बात करनी हो, लेकिन आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट लैंग्वेज. राइट? थर्ड वन is what? When I see it's a group of 7 to 8 people, when it's a group of 7 to 8 people, out of those 7 to 8 people, 5 people are continuously speaking, and I have nothing to say.
इतना बोले जा रहे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कि मुझे घुस के उस डिस्कशन में एंट्री ही नहीं मिल रही है. आई एम नॉट गेटिंग एनी एंट्री इन दैट डिस्कशन. सो आई एम स्ट्रेस देयर एज वेल. एंड हाउ डू आई हैंडल माई स्ट्रेस? ऐसे पसीना पोछे, राइट, पानी पिए, इधर उधर देखे? नो, आई हैव टू बिल्ड माई कंपोजर. शांत होके मुझे आराम से बैठ के डीप ब्रीदिंग एंड लिसनिंग, ये 2 काम मुझे करने हैं. राइट, इफ आई शो दैट आई एम वेरी टेंस्ड, मेरा तो वहीं पे इवैल्यूएशन बहुत नेगेटिव हो गया. बिकॉज लोग क्या देखते हैं कि जब कोई ऐसा सिचुएशन हो जो सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं हो, when the situation is not a very favorable situation for me, how do I react to that? How do I react to that? So, and how flexibly I can always repeat also in a group discussion. I said I absolutely agree with what Kavita or what Manu is saying. ठीक है, उसमें कोई ईगो का इशू नहीं है कि if I say that I agree with you. Of course we agree in so many things. Even if we want to disagree, we get our point of disagreement from the person who is giving his or her points. Right? Right? So these things are very, very important. Okay, flexibility, quick decision making, कि जल्दी हम लोग कैसे सिचुएशन पे होल्ड पा सके. We have a control over the situation. Why listening is important? Because if I listen to you, you will listen to me. Number one, very very clear concept. अगर मैं आप जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनती हूँ, तो जब मेरा चांस आएगा, when my chance will come, you will listen to what I say. So it's a mutual understanding, right? We listen to understand the topic well. जो टॉपिक हम लोगों को दिया गया है, उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए we do listen, right? To generate and accept feelings, to generate a feeling of empathy, to help people start listening to you and to increase other person's confidence on you. So it is very, very important for us to give importance, acknowledge, recognize the existence of the other person when we are communicating. Because when I'm communicating, if you do not listen to me, I will not listen to you. If you acknowledge what I'm saying, I will feel more enthusiastic to speak to you. है ना? आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो तो मुझे I get a cue कि क्या चल रहा है सेशन में. Isn't it? Otherwise, what would have it been? It would have been a reading, one-way communication, जहाँ पे कोई response नहीं है. That communication is never a very successful communication. Interactiveness in any communication process is very important. Right. So, that is why listening is very important. Now, जब हम लोग जीडी के विषय को तय करेंगे, when we will structure the points of GD, right? And we will articulate it, present it. 2 things has to be kept in mind. One is content, the other one is form. क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे. What to be said and how to be said. Right? So content mein what we have to do, what I'm trying to do, if you can understand in this session. Okay, भगाराज राठौर जी, गुड कि आप मेरे सेशन पे है. थैंक यू. Right?
और कहाँ से देख रहे हैं? बार्मर से, राइट? वेरी गुड. See, what I'm trying to do in this session, which I try to do in all my sessions, and I believe you all would agree with me, that I try to give you the practical understanding कि जब सिचुएशन हो जहाँ पे आपको बात करनी हो, जब सिचुएशन होगा जहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होगा. Zoology final year from SKD University, MSc. Wow, that's great. Great to see you in the session, Bhagaraj. Right? जब सिचुएशन हो कि आपको सेशन में पार्टिसिपेट करना होगा, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होगा, कम्युनिकेशन में, प्रैक्टिकली आपको क्या करना होगा? आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल ज्ञान्स, बहुत सारा ज्ञान मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. तो मैं क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि उस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बनाएं, कि जो हम लोग बोलने जा रहे हैं उसको हम लोग कैसे समेटे, कैसे कैसे उसको रेडी करें. The first thing that we need to do is take a pen and a paper. No laptop, no mobile phone will be, note writing in a mobile or a laptop or any electronic device can actually compete with a pen and a paper. तो आपको क्या करना होगा? आपको सारे पॉइंट्स लिखने होंगे. यू हैव टू राइट डाउन वॉट एवर कमिंग टू योर माइंड. अब मैंने एक दिन करवाया था आप लोगों को वो आइडिएशन, इफ यू रिमेंबर दैट, राइट? तो सारे पॉइंट्स जो आ रहे हैं आपको लिखना होगा. यू हैव टू राइट दोस. हिंदी में लिखिए, बंगाली में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कन्नड़ में लिखिए, तमिल में लिखिए. राइट. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट. राइट. द सेकेंड थिंग, एक बार जो भी सपोज ग्रुप डिस्कशन है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में ग्रुप डिस्कशन करना है आपको. प्रवीण कुमार सुथर, वरुण चावला, गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू. राइट. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में ग्रुप डिस्कशन करना होगा. राइट. तो आप द फर्स्ट थिंग क्या लिखेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, क्या बताएंगे? उसको लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए. यू डोंट हैव टू गिव एनी साइंटिफिक डिफिनेशन. You don't have to do that, right? What you got to do, you got to do something which will be helpful to, which you can relate with your own life. कि pollution के रहते हुए क्या हो रहा है? Weather change हो रहा है, बहुत गर्मी, बहुत बारिश, बहुत ठंड. We are actually moving towards an extreme weather situation, right? उसके बाद लिखिए कि आपको या आपके आसपास के लोगों को, संजना सायर, हाय, हाउ आर यू? आपके आसपास के लोगों को इसका इफेक्ट कैसे हो रहा है? बच्चों को खांसी होती है, बहुत लोगों को एस्थमा की बीमारी बहुत बढ़ गई है हमारे चारों ओर, राइट? तो ये कैसे हो सकता है? आपके एरिया में प्लांट्स कितने हैं, कितने प्लांट्स कटे जा चुके हैं? सो यू मेक अ नोट. एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू, write it in any language you want to. In any language you can write. पहले लिखिए. उसके बाद the next step is what? Elimination. आपने 50 पॉइंट्स लिख डाले, 50 वर्ड्स आपने लिख डाले, उसमें से एलिमिनेट कीजिए. 20 को निकाल फेंकिए, 30 को रखिए और उस पे सोचिए कि कैसे आप करेंगे. ठीक है? इस तरह से कंटेंट को डेवलप कीजिए. और एक बात जो मैं आप लोगों को हमेशा से बोलती हूँ कि इन्वेस्ट टाइम ऑन योरसेल्फ. सी हाउ यू स्पीक एंड हाउ डू यू लुक व्हेन यू स्पीक. आईने के सामने घर पे खड़े होके कुछ भी बात कीजिए. एक चाय का प्याला लीजिए, उस पे बात कीजिए. एक ऐसे मेरे पास अभी एक मार्कर है, हाइलाइटर है, उसको ऐसे माइक्रोफोन की तरह लीजिए, खड़े होके बात कीजिए. सी हाउ यू लुक. दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो मैं कराऊंगी धीरे धीरे. कल थोड़ा सा मैंने करवाया था आप लोगों को, राइट? क्योंकि आपका पर्सनालिटी टेलीफोन में भी जाएगा, आपका पर्सनालिटी स्क्रीन में भी आएगी, आपका पर्सनालिटी जब आप घर के किसी सदस्य से बात करेंगे तब भी दिखेगा, और आपकी पर्सनालिटी तब भी जाएगा जब आप ग्रुप डिस्कशन में या कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हिस्सा लेंगे. ठीक है? ये और एक बात है. सेकंड, आप अपने ऑडियंस को समझिए और ये ग्रुप डिस्कशन क्यों हो रहा है उस बात को समझिए.
ठीक है, आप जब फ्रेंड्स के साथ किसी भी विषय में बात कर रहे हैं कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस कैसा रहा लास्ट सीजन में, you can talk about anything because your audience is your friends. They are of your age, they are of your background. They understand cricket like you do. When you are doing it with your teachers in this class, right, your audience has changed. So you have to determine your message कि एक ही चीज को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, right? So understanding your audience is very important. Understanding your audience is absolutely important in a group discussion process, right? दो तीन चीज और भी ध्यान में रखिए, सोच के बात कीजिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी बात करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट किसी कम्युनिकेशन एक्सरसाइज में आपको मिलता है, बल्कि उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं जो थोड़ा सा सोच विचार कर बात करते हैं। सो यू थिंक एंड यू स्पीक, डोंट स्पीक जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, don't utter words just for the sake of speaking. Form your sentences carefully. Logically बात कीजिए, यहाँ वहाँ irrational कुछ भी चिल्ला बिल्ला के बोल दिए नहीं. And use pen and paper. That is very very important. If you do not use pen and paper, if you do not use pen and paper, trust me, नहीं होता है, नहीं होता है. Even when I sit for the class, I sit with a pen and paper. You know why? Because whatever you people say, I try to put it in writing, ताकि बाद में मुझे याद रहे. ऐसे बात करते करते, you know, in the flow of speaking, we speak a lot of things which we might forget later on. So group discussion may be, when you sit with pen and paper, what will happen, you know, 5 people are speaking in a group, 6 people, 7 people are speaking. Generally it is more than 5. तो किसी ने किसी एक पॉइंट कहा है, आप उसको नेगेट करेंगे या आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसको लिख के रखेंगे ना, तो ये क्या होगा, यू विल बी एबल टू relate to it. You can say that as Sanjana was saying this point, I want to add something to that. So you add to what Sanjana or Simu or Manu जिसने भी कुछ कहा है उस पे थोड़ा सा आप जुड़ेंगे, तो you are adding value to the group discussion. What you are doing, you are adding value to the group discussion, right? So these are the things you need to keep in mind. Another thing you need to keep in mind, that when you sit for a group discussion, take care of your body composure. आप जो कपड़े पहन के बैठेंगे, आपके जो बाल होंगे, आपका जो मोबाइल होगा, सारा कुछ सॉर्टेड होना चाहिए, नहीं तो चारों टाइम पूरा 1 घंटा आप सिर्फ बाल ही संवारते रह जाओगे, राइट? आपका मोबाइल टैंग टैंग करके बजता रह जाएगा. नो, put it in silent mode, put it in silent mode, right? And then you speak, and then you speak. आराम से बैठो, comfortably, लेकिन इतना comfortably मत बैठो कि आप लोग सो जाओ. Comfortably with your back straight. If you sit, you will be more confident while speaking. You will be more confident while speaking. And that is why group discussion has to be done, practiced, and practiced. Group discussion has to be practiced, and practiced, because communication without practice is no communication at all. So this is from my side what I have to tell you a little bit about group discussion, right? A little bit about group discussion, which I had to tell you. If you have anything to share with me, you can always do that. You can always do that. Yeah, practice makes a man perfect, but perfection से भी पहले जो है वो है कि हम लोग को जानना है कि what exactly we are trying to do, है ना? क्यों कर रहे हैं ये ग्रुप डिस्कशन? और ये समझिए, ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है किस लिए? मेरे इंग्लिश स्किल्स को देखने के लिए, मेरी टीम मैनेजमेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इवेल्युएटेड इन अ ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस इज टीम मैनेजमेंट. So you are sitting with 10 people whom you do not know, or you might know, right? तो वहां पे क्या होगा, आप सबसे कैसे बन के, how you manage with everyone and speak, that is important. So team management, leadership, कोई कुछ नहीं बोल रहा है डिस्कशन में बैठ के,
somebody who is keeping quiet. So you take up the leadership and you say that, can we hear something from, say, can we hear something from Manu or something from XYZ? I think he or she has to say something. So bringing the weak along with you, जो थोड़ा सा weak है, नहीं बोल पा रहा है, टेंशन में है, उसको थोड़ा सा support देना, which is also a very important managerial skill, which is also a very very important managerial skill, है ना? राइट. सो सिर्फ आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, आपका इंग्लिश कैसा है, वो नहीं देखते हैं. इसके साथ देखते हैं अबाउट योर मेंटालिटी, योर एटीट्यूड, योर वे ऑफ डीलिंग विद पीपल, योर आई कॉन्टैक्ट, right? How smartly you can present, how you consider, how you take care of your tension. सबको टेंशन होता है. आज मुझे अगर ग्रुप डिस्कशन में बिठा दिया जाए तो आई विल ऑल्सो फील टेंस्ड, आई विल ऑल्सो फील टेंस्ड, right? But how do I take care of that, manage that situation? That is important. That is important. Okay, so this is all from my side about group discussion. You can tell me if you have any points to be clarified. To be clarified. ग्रुप डिस्कशन के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. कभी कभी टॉपिक होता है जैसे कि एक केस स्टडी दे दिया गया आप लोगों को, वो पढ़ के उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करना होगा, या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, जैसे कि एक टॉपिक एक बार एक कंपनी ने दिया था मेरे ही स्टूडेंट्स को कि लाइफ इज अ चेयर. जिंदगी को उन लोगों ने एक चेयर के साथ कंपेयर किया था और कहा था कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए और आपका टॉपिक है, योर टॉपिक फॉर ग्रुप डिस्कशन इज लाइफ इज अ चेयर. I gave a group discussion to some group of students sometime on staircase. Staircase मालूम है ना आप लोगों को? सीढ़ी, staircase. Okay, so that is also a kind of a group discussion. कभी कभी होता है बहुत topical issues देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा India's performance in 2020 Tokyo Olympics, right? Or maybe cricket. Yes, I'll come to your issue. Don't worry. Cricket is the only game Indians are passionate about. क्योंकि क्रिकेट के चलते हम लोग किसी और गेम के बारे में सोचते ही नहीं है. सब अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की तरह. कोई जैवलिन एक स्पोर्ट्स हो सकता है, नीरज चोपड़ा से पहले शायद किसी के ध्यान में था, है ना? नाउ सो इन सारे चीजों पे ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं. ठीक है, अभी मैं आती हूँ सिमू और गगनदीप का जो टॉपिक है, पॉइंट था, वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बारे में. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नीड्स टू थिंग. वन इज द कंटेंट, वन इज ग्रामर. तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को सही करने के लिए, हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले ग्रामर सीखने होंगे. सीखना होगा. सेंटेंस को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ये क्या है? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर. जैसे कि द मैन बिल्ड्स अ हाउस. यहां पे क्या क्या है? इस सेंटेंस में क्या क्या है? देयर इज अ नाउन, देयर इज अ वर्ब, देयर आर प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, there is a subject. What is the subject in this sentence? The subject is the man. And what is the predicate? That what is the man doing? He's building a house. He is building a house, right? तो ऐसे करके sentence construction के लिए सिमो, the first and the foremost thing that we need to do is learn a little bit of grammar. Perhaps tomorrow, I do not know if I can do it tomorrow. ग्रामर हम लोगों ने बहुत सारा किया है. आई विल टेक अ 15-minute सेशन ऑन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑल्सो.
शायद इससे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए। हाँ, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में बहुत जनों का गलती होता है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का गलती है, इसीलिए तो स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश के सेशंस हम लोग कर रहे हैं, है ना बेटा? तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे इजी वे आउट टू लर्न सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज टू रीड सेंटेंसेस। 10 सेंटेंसेस को पढ़िए हर दिन, 10 सेंटेंसेस को पढ़िए, अपने आप आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यू विल हैव द क्लैरिटी ऑन योर ओन, on your own. Okay, so that is important sentence construction के लिए, राइट? तो मैं थोड़ा सा सेशन एक लूंगी 15 मिनट्स का, ये छोटा सा ही सेशन होगा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि सिमू और मेरे ख्याल से सिमू के साथ हम सबका एक रिवीजन हो जाएगा हाउ टू राइट अ सेंटेंस। ठीक है? Okay, my dear friends, that's it and that's all from my side for today's edition of Soft Skills Spoken English and Personality Development session of SKD University, Hanumangarh, Rajasthan. I'll see you tomorrow. Till then, थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ो, थोड़ा सा वर्ड्स ढूंढो, थोड़ा सा इंग्लिश में अपने आप से बात करो. That's a fantastic exercise. Once you start learning that, start learning to do that rather, you will enjoy it on your own. ठीक है? कल मिलते हैं. Bye bye. Take care.